Okay, Assalamu alaikum dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our lecture 11 and previously we have started our chapter of phylogenetic analysis. So what we have done previously on this phylogenetics, we have studied about what is evolution, like how the things and organisms and many other factors evolve from the prehistory to the current situation. Okay, then we have studied about phylogeny. We have studied this is a relation between the ancestors and its descendants. And then we have studied phylogenetic analysis and sequence analysis. We have studied what is phylogenetic, how we do phylogenetic analysis, and then we map this phylogenetic analysis to the sequence analysis, how we can construct a phylogenetic tree to the sequence analysis. We have studied all such related things in this topic. Okay, then we have studied there are different types of trees, and we have understand the terminologies of trees, for example root, branches, length, nodes, and many other things like outer branch and internal branches. Then we have analysis that there is an out group and there is a related group. Okay, then we have on number 5 we have discussed the tree construction. Then we, after understanding the phylogeny or phylogenetic analysis, then we have constructed tree construction from either for example we have done we are studying in bioinformatics, so we did phylogenetic construction in the sequence analysis. We took some sequences and made some sequence alignment, and then we get our tree construction of uh, sequences. Okay, then we have studied there are different methods. There are character based methods, there are distance based method. In character based method there is a parsimony or likelihood method, and in distance based method there is a UPGMA, neighbor joining, and there are many other methods comes into the uh, that uh, uh, that is a distance based method. Okay, then we have also done all this practically. We have used different servers and tools. For example, we have used clustol omega to align the sequences, and then we constructed the tree. In the same way, we have done a blast tool in which we have aligned the sequences, and on the we have also practically work on the Phylip software. So I think this is the recap of our previous lecture. So let's start with our today's lecture, that is phylogenetic tree construction. Basically today we will in this week we will do two methods of distance based method, that will be UPGMA, and the other one is joining no, a neighbor joining method. So let's start our today's topic. We will construct a phylogenetic tree with the distance-based method. Okay, outline of today's lecture will be phylogenetic tree types and distance matrix method. We will Today we will do only this UPGMA method that comes under the topic distance based method. Okay, and on the next lecture we will do neighbor joining. Okay, so there is a difference between these two methods. This is the distance based method, and this is the character based method, in which parsimony and maximum likelihood methods algorithms comes or techniques comes under the characters based methods. So today we will do UPGMA. Okay,
Phylogenetic tree क्या होता है? A tree represents graphical relation between organisms, species or genomic sequence. Okay, यहाँ पर they are saying कि जो tree है what it represents graphical relationship, evolutionary relation, graphically उसकी क्या जो है differences है और evolutionary क्या differences है in between organisms, species और genomic sequences. As I have already told you, जैसे कि there are different classifications of animals and there are different classified different terms like reptiles or mammals or invertebrates, vertebrates, and all these are classified to the this phylogeny process. Okay, in bioinformatics, it's based on genomic sequence. So as we are studying bioinformatics, so we will basically analyze our phylogeny for the genomic sequence. So what do they represent? Okay, जो phylogenetic tree है उसमें we have already learned the terminologies: root, leaves, branches, and branch length. What comes under the root? It is the origin of evolution. Leaves, current organism, species, or genomic sequences, which are the most current nodes are leaves, and it is also called outer nodes. Okay, and there can be internal nodes in between root and leaves. Okay, what is branches? Relationship between organisms, species और genomic sequences. अब एक ही रूट से there can be different branches. अब different branches जो है वो particular group से हो सकते हैं, वो particular group का closely relation हो सकता है, and there are some other outgroups जो जिनके ancestor तो same है, but there are some multiple changes in between them, जिसकी वजह से वो दो ग्रुप्स में जो है उनको हम मैनेज करते हैं. ओके, ब्रांच लेंथ क्या है? ब्रांच लेंथ इज बेसिकली द एवोल्यूशनरी टाइम. और एवोल्यूशनरी टाइम जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द रूट टू द लीव नोड्स. जो हम रूट से लीव नोड्स तक का जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एवोल्यूशनरी टाइम. ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे जो है एवोल्यूशनरी टाइम भी कैलकुलेट होता है. इन क्लेडोग्राम इट डज नॉट रिप्रेजेंट टाइम. अच्छा, अब जो क्लेडोग्राम है और फाइलोग्राम है, वी हैव डिस्कस इन आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर. हमने इनका दोनों का डिफरेंस देखा था, क्लेडोग्राम और फिनोग्राम. फिनोग्राम इज बेसिकली द a tree constructed on the basis of the physical similarities. और जो क्लेडोग्राम है वो हम जो है जो इनके लाइक किसी स्पीशीज की जो जीनोमिक सीक्वेंसेस है, फॉर एग्जांपल वी आर स्टडिंग वी आर टेक एन एग्जांपल ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसेस. अब जो जीनोमिक सीक्वेंस है, दिस इज नॉट अ फिजिकल जो फीचर्स हम उसकी बेस पे नहीं कर रहे, हम सीक्वेंस का जो करेक्टर बेसिस है, बेसिकली हम उसके जो चेंजेस है रूट से लेकर लीव के दरमियान जो भी चेंजेस आ रही होती हैं, दैट कम्स अंडर द क्लेडोग्राम. सो क्लेडोग्राम जो है वो इट डज नॉट रिप्रेजेंट टाइम, उसमें हम टाइम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. ओके, दिस इज now we have also studied what is rooted and unrooted tree. Okay, now what is rooted and unrooted trees? These features are for rooted tree. Rooted tree में basically क्या है कि directed to a unique node. हमारे पास एक node है, for example this is a rooted tree. ठीक है, and here from one node originate two nodes, and कोई भी branch है उसमें भी originate there can be two leaves. Or unrooted tree shows the relatedness of the leaves without assuming ancestry at all. Unrooted tree में जब unrooted है तो there we cannot assume any ancestor, इनका कोई root node obviously नहीं है. और relatedness of the leaves, अब A और B की relatedness को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, C और D, और इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ हम जो है इनका रिलेटेडनेस शो कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे कि हमने
इस केस रूटेड के केस में देखा कि वन नोड ओरिजिनेट टू लीव्स, टू ब्रांचेस ओरिजिनेट टू लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनरूटेड ट्री है, इन टू नोड्स, टू लीव्स, थ्री ब्रांचेस, मतलब दो नोड्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन नोड और यहाँ से 1 2 एंड दिस इज थर्ड ब्रांच, तो एक ही नोड से थ्री ब्रांचेस कैन बी इमर्ज। ओके, more tree types used in bioinformatics. however क्या है unrooted tree, unrooted tree जो bioinformatics में हम कुछ और टाइप्स भी देखते हैं जो कि rooted tree में आते हैं, ठीक है। cladogram, phylograms, ultrametric. okay, cladogram and phylogram we have discussed already, जिसमें हम कहते हैं कि जो cladogram है बेसिकली हम उसमें रिलेशनशिप देख रहे होते हैं ancestors and descendants का, और here we can also say that branch length have no meaning, like यहाँ पर branch length का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब कि जैसे कि हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अल्ट्रामेट्रिक होते हैं। अल्ट्रामेट्रिक में बेसिकली हम क्या करते हैं कि रूट नोड से फॉर एग्जांपल इस केस में रूट नोड से लेकर अगर हम एक का जो टाइम कैलकुलेशन करें तो वो ए बी एंड सी और डी का सेम होना चाहिए। सो दिस इज अल्ट्रामेट्रिक, ठीक है। लेकिन जो क्लेडोग्राम है उसमें जो है रूट लेंथ जो है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग ब्रांच लेंथ हैव नो मीनिंग। तो अच्छा, फाइलोग्राम क्या है? बेसिक ब्रांच लेंथ रिप्रेजेंट्स एवोल्यूशनरी चेंज। अब यहाँ पर क्या है कि ब्रांच लेंथ बेसिकली क्या कर रहा है, एवोल्यूशनरी चेंज बता रहा है कि रूट से लेकर डी तक का कितना टाइम लगा उसको चेंज होने में। इसी तरह से अल्ट्रामेट्रिक क्या है, इसमें श्योर है कि जो रूट से लेकर डी का इक्वल टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए का रूट के साथ बी का कैलकुलेट करे, सी और डी का कैलकुलेट करे तो वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रामेट्रिक। ब्रांच लेंथ रिप्रेजेंट टाइम, इसमें ब्रांच लेंथ जो है वो टाइम का जो है रिप्रेजेंट कर रही है एवोल्यूशनरी टाइम को, एंड द लेंथ फ्रॉम द रूट टू द लीव्स आर सेम, ठीक है। और इसमें ब्रांच लेंथ जो है वो टाइम तो कैलकुलेट करिए, बट इसमें भी जो है वो एवोल्यूशनरी जो चेंज है, एवोल्यूशनरी चेंज तो रिप्रेजेंट कर रही है, बट मे बी लाइक इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं कि इनमें जो है लेंथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट स्टिल here we can differentiate cladogram and phylogram. Cladogram is basically the descendant relationship between the descendant and the ancestors. Phylogram is basically the relatedness of the two leaves or branches. और अल्ट्रामेट्रिक में बेसिकली रूट से लेकर जो हम एंड नोड्स होती हैं उनका जो टाइम कैलकुलेशन होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें जो ब्रांच लेंथ है, दिस इज प्रेजेंटिंग द टाइम, एंड रूट से डी तक का जितना भी टाइम है वो इन सारी नोड का सेम होगा। ओके, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री। स्टेप 1, हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम सीक्वेंस अलाइन करें, ठीक है। हमने डेटाबेस से जो बेस सीक्वेंस है उसको लिया, एंड देन हमने उस बेस सीक्वेंस से रिलेटेड जो सीक्वेंसेस है उन्हें फर्ज किया ब्लास्ट टूल से, और हमने इनका सीक्वेंस अलाइनमेंट किया, एंड देन आफ्टर दैट वी able to construct a phylogenetic tree. So step 1 is make a multiple sequence alignment from the बेस अलाइनमेंट। जो बेस अलाइनमेंट हमने सेलेक्ट की उसको हमने बेस अलाइनमेंट कहा, और उसमें से हमने जो रिलेटेड सीक्वेंसेस थे उनका हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट किया, एंड देन वी विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनेटिक ट्री। अच्छा, मेक अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट फ्रॉम बेस अलाइनमेंट, वो डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है, और अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस भी हो सकता है, एज वी हैव practically worked on amino acid sequences. So by using muscle blast, clustol, omega, w, and there are many softwares that will help you in making multiple sequence alignment. Okay, this is an example of multiple sequence alignment.
Okay, how to construct a phylogenetic tree? As we have discussed that this is the this is how we are aligning multiple sequence alignment. These are 1 2 3 4 5 6 7 8. These are 8 sequences, and um, we are trying to do the multiple sequence alignment. We have seen that this region is similar in this case. ठीक है, यहाँ these are the gaps or variations, or sometimes there is a change, like this is in this column we see that यहाँ पर जो C's हैं 7 और 8 का जो region है वहाँ पर T है. So this shows the mutation or change, right? After doing multiple sequence alignment, we constructed the phylogenetic tree. अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो बर्ड का है, लिमर, चिम, ह्यूमन, डॉग, कैट एंड एटसेट्रा. अब यहाँ पर हम इसका जो रिलेशनशिप है इस फिगर को हम किस तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं. We can see that chimpanzees and humans are closely related. Dog and cats are closely related. Cow and pig are closely related. अब डॉग एंड कैट का एक क्लस्टर है, सी एंड पिग का, काउ एंड पिग का एक क्लस्टर है. इन दोनों का भी जो है there can be a like relatedness from to each other. ठीक है. अब चिम्प एंड ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है दैट इज फ्रॉम लिमर. ठीक है, लिमर इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, यू कैन चेक इट ऑन द गूगल. इसका चिम्प एंड ह्यूमन का जो है there are some mutations and changes, but they have a relation with lemur, but there can be a huge differences. ठीक है. अब इस क्लस्टर को इस क्लस्टर के साथ ज्वाइन किया. obviously they can be comes into the mammals maybe. okay. अब जो bird है this is the out group, very out group. इस केस में यहाँ पर ये एक आउट ग्रुप है, ये एक ग्रुप है एंड दिस वन ग्रुप. ठीक है, इनको हमने एक क्लस्टर का, इसको हम दूसरा सेकंड क्लस्टर कहते हैं, और ये बिल्कुल आउट ग्रुप है. सो बर्ड्स मे बी these all are comes under the like mammals. इस वजह से जो है इनका जो है closely relation है, but birds maybe are not mammals, that's why they are not close related to one of any of them. ठीक है. So how we can illustrate the or annotate the phylogenetic tree we have constructed from this sequence. okay. Step 2 क्या है? Step 1 again see, step 1 was make multiple sequence alignment from the base sequence. उसके बाद check the multiple sequence alignment if it reflects the evolutionary process. अब हम इसका क्या करेंगे, evolutionary process को जो है वो check करेंगे. Third step क्या है? Choose what method we are going to use and calculate the distance, or use the result depending on the method. हम अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम एक मेथड को चूज करेंगे. बेसिकली चूज कौन सा मेथड यूज करें, हम वेक्टर बेस्ड मेथड यूज करें और डिस्टेंस बेस्ड मेथड यूज करें. ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस. हम जो आज का जो लेक्चर्स में हम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस बेस्ड मेथड से जो है फाइलोजेनेटिक ट्री कैलकुलेट करेंगे, ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, और यूज द रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द मेथड. अच्छा, स्टेप 4 क्या है? वेरीफाई द रिजल्ट स्टैटिस्टिकली. हम स्टैटिस्टिकली भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं. अच्छा, सो टुडे वी विल डू डिस्टेंस बेस्ड मेथड, दैट इज UPGMA. ठीक है, दिस इज UPGMA. ओके, सो कैलकुलेट ऑल द डिस्टेंस बिटवीन लीव्स और टेक्सास. जो लीव्स है दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेक्सास. इनके दरमियान जो लीव्स हैं, बेसिकली हम उन लीव्स के दरमियान जो है टेक्सोनमी कैलकुलेट कर रहे होते हैं. ठीक है, वी विल यूज इट विद द डिस्टेंस मेथड. ओके, बेस्ड ऑन डिस्टेंस कंस्ट्रक्टेड ट्री. हम जो डिस्टेंस मैट्रिक्स होगा उसकी बेस पर हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. गुड फॉर कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर्स, नॉट वेरी एक्यूरेट
अच्छा, अब बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, देयर कैन बी एक्यूरेट और दे कैन नॉट बी नॉट वेरी वेल एक्यूरेट। इसका मतलब ये है कि अगर हम छोटे सीक्वेंसेस पे इन एल्गोरिथम्स पर काम करें तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट से देंगे, लेकिन अगर बात आएगी ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर हमारे पास सीक्वेंसेस और हम उस पर ये एल्गोरिथम रन करते हैं तो इट माइट कैन नॉट बी accurate. ठीक है, it is the fastest method but sometimes it is not accurate in some cases. ठीक है, in maybe in huge amount of sequences. अच्छा, fastest method है और अब हम इसमें से एक method जो है वो आज करेंगे. Okay, what is UPGMA? That is abbreviation of unweighted pair group method with arithmetic mean. इसको हम तीन चीजों में डिवाइड करेंगे. अनवेटेड, ठीक है, ये अनवेटेड है, पेयर ग्रुप एंड अरिथमेटिक मीन. वी विल सी हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द हाउ वी डू पेयर ग्रुप्स एंड हाउ वी डू अरिथमेटिक मीन. ठीक है, ओरिजिनली developed for numeric taxonomy in 1958 by Sakal and Mishner. Simplest algorithm for tree construction, so it's fast. मतलब ये बहुत ही simple tree construction algorithm है. और okay, how to construct a tree with UPGMA? Prepare a distance matrix. Basically, we will be given distance matrix, and then we will do repeat step 1 and 2 until there are only 2 clusters. ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, उसमें से हमने दो नोड्स का या दो नोड्स का क्लस्टर बनाएंगे और उनकी बेसिस पे जो है ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो स्टेप 1 विल बी क्लस्टर अ पेयर ऑफ लीव्स टेक्सा बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जो आपकी मैट्रिक्स में सबसे शॉर्टेस्ट जिसका डिस्टेंस होगा हम उसको पेयर करेंगे और उसको हम क्लस्टर कहेंगे. ठीक है, स्टेप 2 क्या है? रिकैलकुलेट अ न्यू एवरेज डिस्टेंस विद न्यू क्लस्टर एंड अदर टेक्सा एंड मेक अ न्यू डिस्टेंस मैट्रिक्स. हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी उसमें इसका जो शॉर्टेस्ट पेयर होगा उसको हम पेयर बनाएंगे, क्लस्टर करेंगे, क्लस्टर उसको कहेंगे, एंड देन उसकी बेस पर हम रिकैलकुलेशंस करेंगे. कुछ लाइक वेरी सिंपल फार्मूला है, उसके थ्रू हम डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास न्यू कैलकुलेशन आएगी. फिर हम दोबारा से स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है परफॉर्म करेंगे अनटिल और अनलेस हमारा जो क्या कहते हैं, देयर आर ओनली 2 क्लस्टर्स. लाइक जब तक हमारे पास सिर्फ 2 क्लस्टर्स जो हैं एंड पर नहीं रह जाते. ओके, सो ओके, एग्जांपल ऑफ यूपीजीएमए से हमें काफ़ी जो है जो सारी बातें हमने पीछे डिस्कस की वो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगी. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ यूपीजीएमए. ठीक है, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है. हाउ वी विल वर्क ऑन इट? यू कैन फाइंड इट द शॉर्टेस्ट पेयर डिस्टेंस. ठीक है, ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. इस तरीके से हमने जो है ए और बी को एज अ लीव नोड्स हमने कहा कि ये शॉर्टेस्ट है, इसको हमने पेयर कर दिया. ठीक है, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? वी हैव ए बी सी डी ई, वी हैव 5 नोड्स, ए बी सी डी ई आर, वी हैव 5 लीव नोड्स. ठीक है, और इन लीव नोड्स का जो है हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ट्री कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो हमारे पास जो पेयर था वो ए बी है. ठीक है, ए बी क्योंकि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पर है और ए और बी के दरमियान जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए बी का सी का हम ए बी के जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सी का ए बी के साथ, डी का ए बी के साथ एंड ई का ए बी के साथ. ठीक है, तो सी का अगर हम ए बी के साथ कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आता है कि अब ये देखें, सी का जो कैलकुलेशन अगर करते हैं ए बी के साथ तो वो 60 + 50 है. ठीक है, 60 + 50. और अब जो हमने अरिथमेटिक मीन कहा था, दिस इज द डिस्टेंस मेथड. हम पेयर ग्रुप बना रहे हैं एंड देन वी आर डूइंग अरिथमेटिक मीन. अब इन दो पेयर्स को हमने डिवाइड किया 2 के साथ एंड दैट इज इक्वल्स टू 55. ठीक है, देन वी विल डू द पेयर ग्रुप
वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डी टू ए बी, ठीक है। ए बी तक आप इसका देखें, आप ए एंड बी एंड यहाँ से आप डी का कैलकुलेशन करें 190, ठीक है। इनका कैलकुलेशन की एंड देन ई टू ए बी 90 टू 80, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो ये आपके पास न्यू कैलकुलेशन आ जाएगी 55, 95 एंड 85 फॉर सी टू ए बी। यहाँ आप सी टू ए बी इस जगह आप 55 लिखेंगे और C to D to AB is 95, E to AB is 85. This is your average calculation. Okay, so you have written 55, 95 and 85 जो new calculations आपके पास आई थी, these are 55, 95 and 85, ठीक है। C का AB के साथ, D का AB के साथ and E का AB के साथ, और बाकी की जो मैट्रिक्स है वो आप as it is लिख लेंगे, क्योंकि AB की कैलकुलेशन हो गई, so we have left only this matrix, sorry this matrix, ये वाला portion we will copy it as it is. Okay, अब क्या है, न्यू एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा, अब हमारे पास जो 1 and 2 स्टेप हमने कर लिया, अब जो हमारे पास still we have nodes like A, B, C, D, E, ठीक है। So we have 1, 2, 3 and 4 nodes are still we have. So now this is step 1, find the shortest distance which is 30 and that is D and E, ठीक है, D and E का। So as we have previously we have done A and B का जो था shortest distance हमने देखा 20 था, D और E का shortest distance 30 है, और अब हम दोबारा से एवरेज कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेशन करेंगे बिटवीन ए बी का, हम सॉरी डी ई है। अब डी ई का हम कहाँ से देखेंगे, ए बी का डी ई के साथ, क्योंकि अब ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और सी रह गया। ए बी को हम डी ई तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो डी ई इज 95 एंड 85, ठीक है। डी ए बी, ये आपका ए बी है और ये आपका डी ई है, और डी ए बी का डिस्टेंस है 95 और 85, इनको आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 90, और इसके अलावा आप सी का भी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सी के लिए करेंगे सी सॉरी C2 DE, ठीक है, DE as it is। अच्छा, अब C को अगर हम DE के साथ कैलकुलेट करें तो that will be C का आपका DE के साथ कैलकुलेशन है, तो that is 40 and 50, ठीक है, 40 plus 50, sorry I can't write it well with this annotation, 40 plus 50, और अगर आप इसको पूरे को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो your result will be 90 over 2 equal to 45, ठीक है। So we have the new distance, new average distance between AB to DE जो है वो आपका आएगा AB के लिए 95 and 85, which is 95 plus 85, और and there is average distance is 90, okay। और जो C के लिए है that is DE के लिए 40 plus 50, ठीक है। So this is 90 over 2 equals to 45. So here we can say that 55 and 90 जो हमारी न्यू कैलकुलेशन थी, दिस इज हियर, सॉरी ए बी के लिए जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था दैट इज 95 to 85, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 90, 55 विल बी रिमेन एज इट इज, ठीक है।
55 will be remain as it is, और DE का जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया था दैट इज 90, और C का AB का DE के साथ कैलकुलेशन किया था, और C का आपने DE के साथ कैलकुलेशन किया था. सो दिस इज 90 एंड 45 जो न्यू मैट्रिक्स है. और अब इनमें से जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, नाउ दिस इज स्टेप 1 अगेन रिपीटिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 45. तो अब 45 बेसिकली सी का डी ई के साथ है, ठीक है. तो डी ये एक नोड है और ये एक नोड है. अब डी और ई का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं सी के साथ, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 45, ठीक है. और अब हमारे पास जो है ए बी का जो डिस्टेंस अगर हम देखते हैं सी डी ई के साथ, ठीक है. अब हमारे पास दो नोड्स हैं, डी ई सॉरी सी डी ई एक नोड है, टू ए बी हम इसका डिस्टेंस देख रहे हैं 90 प्लस 55. 90 प्लस 55 बेसिकली ए बी, 50 प्लस और 90 जो है ये आपका सी डी ई जो है वो टू ए बी आप कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज 72.5. सो हियर यू विल राइट 72.5, ठीक है. दिस इज योर लास्ट सीक्वेंस. सो our tree construction is complete now. तो अब जो सी डी ई है बेसिकली सी डी ई का जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया वो ए बी के साथ वो 72.5 है. देर आर ओनली टू क्लस्टर्स, सो दिस completes the calculation. Okay, these are the two clusters A, B, and C, D, E. You can say this is the outgroup for these clusters. ठीक है. Downside of UPGMA. Okay. Assume molecular clock. Assuming the evolutionary rate is approximately constant. Clustering works only if the data is ultrametric. हम जो clusters बना रहे हैं basically it only work for the ultrametric. Ultrametric means root node का जो A के साथ अगर हम उसका जो evolutionary time calculate करते हैं वो same होता है. तो जो clustering है basically वो ultrametric के लिए work करती है. So this is our ultrametric tree. Okay, it does not work the following case. So we can understand the molecular clock in terms of evolutionary rate is approximately constant. Okay, I should tell you what is molecular clock. Basically, it tells us, or we are assuming that evolutionary rate is approximately constant. Evolutionary rate जो है वो constant होगा. I will give you an example. By molecular clock, which is denoted the clock, मतलब वो एक time calculate कर रहा है. We mean that the average substitution rate at a given site and given the present nucleotide is same in all parts of the phylogenetic tree. Now you can see that molecular जो evolution है that is telling us that कि ये जो leaf nodes है अगर हम इनका मॉलिक्यूलर क्लॉक चेक करते हैं, इसका एवोल्यूशनरी टाइम चेक करते हैं, दैट इज यहाँ पर चेंजेस तो हैं बट इन जब अल्ट्रामेट्रिक केस में हम देखते हैं कि रूट नोड का लीव नोड का जो डिस्टेंस है वो सारी नोड्स के लिए जो नोड्स के लिए सेम है. दैट मीन्स कि जो एवरेज we mean that average substitution rate is given site which is same in all parts of the tree. ठीक है, average जो calculation है वो same है in all parts of the for the leaf nodes. ठीक है, for A, B, C, D, E average अगर हम इसका जो time calculate करते हैं that is same for all these nodes. So this is how we calculate assume molecular clock, and we assume that evolutionary rate is approximately constant. ठीक है, हम इसको constant कहते हैं कि जो इनके root nodes हैं उनका evolutionary rate जो है वो constant है, उनमें change नहीं हो सकता. Okay, clustering works only if the data is ultrametric. I have discussed doesn't work for the following case. अच्छा, जो next lecture है that will be of neighbor joining method. Which is developed in 1987 by Seitu and Yi.
works in a similar fashion to UPGMA. ये भी UPGMA ही की तरह का काम करता है, but it is a bit changed, which is still fast, work great for large errors. अब जैसे हमने बात की थी कि UPGMA is not accurate, but it work for large errors. That means it is accurate, doesn't require the data to be ultrametric, great for largely varying evolutionary rates. तो हम largely जो variation है उसमें ये बहुत helpful है. So this is an example of neighbor joining trees for dog. तो ये एक जो है नेबर जॉइनिंग के थ्रू हमने ट्री कंस्ट्रक्शन की है डॉग्स के लिए. उनके दरमियान जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं उसको जो है evaluate करने के लिए नेबर जॉइनिंग यूज हुआ था. If you want to go through this paper, you can, I will share it on the class group for this paper. आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि इसमें उन्होंने क्या changes बताई थी इस figure से. उन्होंने like there are different evolutionary change in between these types of dogs. ठीक है. So this is the end of the lecture and thank you. Allah Hafiz.